Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. I am Miss Amna Zohra Qureshi, Assistant Professor of English. And today we are going to study poem number 9, and its name is Solitary Reaper. And it is composed by William Wordsworth. As this poem is very important and the poet is also very important, so this lecture will be divided into two sections. So this video is the first section and the second would be afterwards. Okay, let's start with the poet. Here is the picture of the poet. This is William Wordsworth. William Wordsworth, right? And some information about the poet, as this is my pattern or format of teaching any poem, because we can better understand a poem after knowing some facts about the poet. So he is called the poet of nature. Why? Because he was a worshipper of nature and he was a devotee and high priest of nature, and that's why he believed that nature gives joy to the human hearts, and he looked upon nature as exercising a healing influence on sorrow-stricken hearts. So for him, nature was a nurse, nature was a guide, nature was very benign and very kind, and a kind of force which guides you through fear and wisdom. So he believes in that nature guides you in the best possible way, and nature never hurts you, nature never like misguide you the thing. And this is the very famous line of the poet: to me the meanest flower that blows can give thought they do often lie too deep for tears. So this is his point of view about nature. So William Wordsworth was one of the greatest poets of early Victorian era, and he was born at Cockermouth in 1770, and he was the pioneer of romantic movement. What was that? Classical पहले पोइट्री लिखी जा रही थी, न्यू क्लासिकल, उसमें इट वाज अबाउट किंग्स एंड क्वींस, और बड़ा वो फॉर्म्स का और लैंग्वेज का और इस चीज का बड़ा ख्याल किया जाता था. बट रोमांटिक पोइट्री इट इज मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव, राइट? इसमें जो है आपकी अपनी फीलिंग ज्यादा होती हैं, इसमें आम लोगों के बारे में उसने लिखा. जैसे इस पोइम में होगा एक हाईलैंडेस है, ठीक है, शी इज जस्ट रीपिंग द क्रॉप, फसल काट रही है, and she's singing a song. She's just a very common girl. इसी तरह इसने एक पोइम लिखी डेफोडिल्स, ठीक है, फूल के बारे में लिख दी. इस तरह आम लोगों के बारे में ये जो है इसकी ज्यादा पोइट्री होती है. इट इज मोर ऑफ सब्जेक्टिव, लैंग्वेज इज सो सिंपल, और बहुत एक पावरफुल एक फ्लो ऑफ इमोशंस हमें इसमें मिलता है. सो ही इज पायनियर ऑफ दैट रोमांटिक मोमेंट. सो his literary career was thriving and sensational. बड़ा सेंसेशनल सा और थ्राइविंग सा इसका करियर था. और उसने जो है कॉलरिज के साथ मिलकर एक बुक पे लिखी थी जिसमें दे इंट्रोड्यूस द मोमेंट रोमांटिक पोइट्री के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ पोइट्री दे आर गोइंग टू राइट, और what the poetry would be about, or all these things, what is the definition of poet and poetry and all that. And the book's name was Lyrical Ballad, and it was written in 1798. So this book is very important. और इसमें जो है रोमांटिक मूवमेंट के बारे में जो है बताया गया है, पोइट के बारे में, पोइट्री के बारे में. और इसकी जो मुख्तलिफ बुक्स हैं, द फेमस राइटिंग्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इसकी बड़ी मशहूर है. फिर उसके बाद जो है एक्सकर्शन, और फिर उसके बाद द प्रिल्यूड जो है इसकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. इट वॉज रिटन इन 1850, पब्लिश हुई थी ये. और उसमें अपनी चाइल्डहुड की बातें उसने की हैं. हाउ नेचर गाइडेड हिम थ्रू फियर एंड विजडम. किस तरह वेन एवर ही डिड समथिंग रॉन्ग, तो किस तरह फियर के जरिए जो है नेचर ने उसे गाइड किया कि दिस इज रॉन्ग एंड ही शुड डू समथिंग रॉन्ग. और विजडम उसको कैसे हासिल हुई थ्रू नेचर, और मुख्तलिफ इंसिडेंट्स उसने अपने बयान किए. इट इज सो ब्यूटिफुल बुक, एंड आई सजेस्ट कि हर कोई जो है इसको ज़रूर पढ़े. सो वन ऑफ द वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री जो इसने दी है, जो कि हर कोई कोट करता है और हर जगह होता है, वो क्या पोइट्री इसके लिए क्या है. सो पोइट्री
uh, is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. So it thinks that it is a spontaneous overflow of powerful feelings. ये ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आप बैठ के सोचने लग पड़े आज तो मैं पोइम लिख के उठूंगा या उठूंगी. दिस कैन नॉट हैपन. दिस इज अ पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स. एकदम से आपके ऊपर एक जो है वदियत होती है, एक अल्हाम होता है कह लें, या आपको एक आइडिया आता है, समथिंग क्लिक्स यू. ठीक है, आपको कोई इंसिडेंट अच्छा लग सकता है, आपको कोई चीज खूबसूरत क्लिक कर सकती है, एंड देट inspires you to write something. So it takes its origin from emotions recollected in tranquility. वो emotions, वो चीजें आप ले आते हैं, ठीक है, वहां से इंसिडेंट को आप ले आते हैं. आफ्टर सम टाइम when they are stored in your memory, you think about that, and in that tranquility you write a poem, right? So this is what he says, and this is the definition given by Wordsworth. So what type of poem we are going to read? This is the name of the poem is Solitary Reaper. So this is a beautiful lyric. This is a lyric, and it describes the effect of nature on human mind, right? The poet says, these are the lines of Wordsworth: nature never did betray the heart that loves her. So for him, according to the poet, nature always gives, or nature is a source of pleasure and joy. So these are a bit things about the poet, and something about the his poetry and style of poetry. Okay, now we'll go to the second part.